Hi everyone, a very good evening to all of you and welcome back once again on your favorite YouTube channel ipmat Wallah, where we help students, the aspirants, to prepare for ipmat, 𝐺PMAT examinations. And since for this season all the examinations are already over, so we are going to look at ipmat batch 2026. So friends, before starting this series, which is called ipmat Foundation series, we have gone through ipmat Pre-Foundation series. And I'm happy to know that a lot of students have attended that series and they have continued with this series of ipmat Foundation. अब हमने प्री फाउंडेशन में किया क्या था? प्री फाउंडेशन में we discussed about the different things that may appear in logical reasoning and data interpretation section, right? Then logical reasoning में हमने 2-3 topics briefly discuss किए थे. Data interpretation होता क्या है हमने वो discuss किया था. Now with the beginning of this new series ipmat Foundation, now here we'll be taking on every topic one by one, right? So there will be a total of 8 lectures that are going to happen in ipmat Foundation for logical reasoning data interpretation. And हर एक क्लास में हम एक टॉपिक पिक करेंगे एंड हम उस टॉपिक के बेसिक्स पे वर्क करेंगे. Like in the last week we have worked on the basics of linear arrangements, right? So plenty of you were there in linear arrangements, and today we are going to take on circular arrangements, right? So this is what we are going to do in today's class. Now some students have already joined in. A very warm welcome to all of you. Hello everyone. So can you first of all please confirm if I'm clearly visible and audible to each and every one of you? Just write yes if I'm clearly visible and audible, and then we'll begin this lecture. PW से join नहीं हो रही क्या किसी की? Don't know. Sir, I have one question. Ankar Haldar, yes, go ahead. Whatever question you want to ask, please go ahead. Sir, I am in 11th. How can I start preparing for ipmat Indore? Please help. Now, Komal, you are in class 11th. So आपके पास दो possibilities हैं, दो options हैं. देखो, generally जो syllabus है ipmat के लिए, this can be easily covered in a period of 8 to 9 months, right? तो आप क्या कर सकते हो? आप 11th standard में हो तो अभी से ही preparation start कर सकते हो. You can join any of our batches, the regular batches at ipmat Wallah. So batches को join करने के बाद आप next 1 year में till the time you are in 11th standard आप अपना syllabus complete कर सकते हो. Now after that when you enter 12th standard तो आपके पास जो 12th बोर्ड का लोड होगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, बिकॉज ipmat की प्रिपरेशन आप ऑलरेडी कर चुके हो, राइट? सो आपको बोर्ड्स पे ज्यादा ध्यान देना है एंड 12th स्टैंडर्ड में सिर्फ यहाँ पे ipmat इंदौर की आप रिवीजन कर सकते हो. यू जस्ट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस, राइट? तो जो आपका लोड 12th स्टैंडर्ड में आने वाला है आप उसको 11th स्टैंडर्ड में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, सो दैट यू विल कंप्लीट द इंटायर सिलेबस व्हेन यू आर इन 11th स्टैंडर्ड एंड 12th में आके आपको सिर्फ रिवीजन करना है, राइट? सो दिस इज वन पॉसिबिलिटी दैट यू कैन वर्क विद. Okay, all right. I have given 12th board this year. I'm thinking of doing ipmat. So should I doing this? Okay, drop year or join a college? Should I okay, so अंकन हल्दर, आपका सिंपल सा क्वेश्चन है. 12th क्लास कंप्लीट हो चुकी है, अब क्या करें? अब कंप्लीटली हम ipmat की प्रिपरेशन पे अपना टाइम स्पेंड कर दें या फिर एज अ बैकअप ऑप्शन हम एक कॉलेज ज्वाइन कर ले एंड पैरेलली ipmat की प्रिपरेशन करें. सो ऑब्वियसली ये जो सेकंड ऑप्शन है ना, पैरेलली एक कॉलेज ज्वाइन कर ले एंड हम ipmat की प्रिपरेशन स्टार्ट करना शुरू कर दें, दिस इज ऑलवेज a good option to work with because like taking admission in college will act as a backup option for you. देखो यार, कुछ भी हो सकता है. अगले साल अगर बाय चांस आपका ipmat में नहीं हो पाया, राइट, तो आपका पूरा का पूरा एक साल वेस्ट हो जाएगा. ओके, सो इन दैट केस एज अ बैकअप ऑप्शन आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लेना चाहिए एंड उसके पैरेलल आप ipmat का कोई भी बैच ज्वाइन कर लो एंड अपनी स्टडीज कंटिन्यू कर सकते हो, राइट? सो दिस विल बी अ बेटर ऑप्शन टू वर्क अपॉन, right? So now friends, let's come to today's agenda. आज का एजेंडा क्या है? सर्कुलर अरेंजमेंट्स. तो सबसे पहले सर्कुलर अरेंजमेंट्स समझने के लिए आपको जो लास्ट वीक क्लास हुई थी लीनियर अरेंजमेंट्स वो भी अटेंड करनी पड़ेगी.
ठीक है, तो जिस भी स्टूडेंट ने लास्ट वीक की क्लास अटेंड नहीं की है उनको थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशन समझने में प्रॉब्लम होगी, इतनी भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट? बिकॉज सर्कुलर अरेंजमेंट्स में मोस्ट ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस विल बी कंटिन्यूड फ्रॉम लीनियर अरेंजमेंट्स, ठीक है। सो लास्ट वीक लीनियर अरेंजमेंट्स में हमने क्या किया था, हमने बहुत सारी स्टेटमेंट्स में डील किया था। आई हैव टेकन ईच एंड एवरी स्टेटमेंट सेपरेटली एंड मैंने उसका इंटरप्रिटेशन बताया था। इफ ए इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ बी, इफ ए इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, इफ ए इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो ये बहुत सारी हमने स्टेटमेंट्स, अलग अलग स्टेटमेंट्स कंसिडर की थी एंड उन सबका मैंने अलग अलग आपको इंटरप्रिटेशन बताया था, राइट? तो सिंपल सी वो चीज आज की क्लास में हम यूज करने वाले हैं, राइट? सो लास्ट क्लास में हमने एक दो क्वेश्चंस किए थे and we will be continuing from where we have left in the last class. Okay, so today we are going to take on circular arrangements. Now circular arrangements में दो rules ऐसे हैं, दो statements ऐसी हैं जिनका interpretation थोड़ा सा different होगा as compared to linear arrangements, right? So let's talk about circular arrangements first of all and then we'll talk about these statements, right? Now in case of circular arrangements, first of all, you will be given what is the direction in which the persons who are sitting around the circular table sitting, right? So, कौन सी direction face कर रहे हैं, सबसे पहले ये given होगा. Now, in general, what we are given, so let's say there are 8 people who are sitting around this circular table. तो सबसे पहली चीज, अगर 8 people, if 8 people are sitting around this circular table, then all these people will be sitting equidistant from each other. सारे के सारे equal distance पे बैठेंगे, ठीक है? तो पहले मैं क्या करूंगा, इस circular table को 8 equal parts में divide कर दूंगा. So I'll mark 8 places such that this entire circle is divided in 8 equal parts. Done? It is done here. So chair number 1, chair number 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, right? Now after this, let us suppose that it is given that all these 8 people who are sitting around this circular table are facing towards the center of the table, okay? So if everyone is facing towards the center of the table, so इनका face अंदर की तरफ होगा. So like last time हमने linear arrangements में discuss किया था left and right. So left and right we took it as per our convenience. हमने left और right assume किया था अपनी convenience के हिसाब से. यहाँ पे हम अपनी convenience के हिसाब से नहीं कर सकते. हमें अब left और right will have to be specific according to the person who we are considering. ठीक है? So all of you tell me, if let's say a person A is sitting here and leave this statement for the time being, A is sitting at chair number 6. So all of you tell me, चेयर नंबर 6 के इमीडिएट लेफ्ट में कौन सा चेयर नंबर होगा? ऑल ऑफ यू, विच चेयर विल बी टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ चेयर नंबर 6? चेयर नंबर 6 के इमीडिएट लेफ्ट में कौन सा नंबर चेयर होगा? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स. इमीडिएट लेफ्ट, ओके? Now whosoever is sitting on chair number 6, chair number 6 पे जो भी बैठा है उसका face कहाँ है, कौन सी डायरेक्शन में है? He is facing towards the center of the table, ठीक है, right? That person is facing towards the center of the table. तो person A is facing towards the center of the table. इसका left कहाँ पे होगा? इस तरफ. इसका right इस तरफ. So immediate left is chair number 7 and immediate right is chair number 5. Okay? So if anyone is sitting facing towards the center of the table, तो इसका left कहाँ होगा? इस डायरेक्शन में, and this will be the right. Alright, simple. आप क्या करो, मैं तो अभी ये पूरा का पूरा पैनल स्क्रीन को मैं रोटेट नहीं कर सकता, ठीक है? बट आप क्या कर सकते हो, आप अपनी नोटबुक में ये फिगर बनाओगे and you can rotate your notebook, ठीक है, considering that you are sitting in place of this person, right? तो आप notebook को अपना rotate करके आराम से left और right find out कर सकते हो, बहुत easily ये determinable है, ठीक है? तो एक तो ये important चीज है कि left और right determine करना according to the person who is sitting on this table, right? ठीक है?
Now, there are some statements in circular arrangements which are different, जिनका interpretation different है as compared to linear arrangements. Now, these are two statements. Statement number one written on your screen. So, linear arrangement में अगर आपको given होता था B sits to the left of A. So, linear arrangement, let's say A is sitting here, right? A is sitting at chair number 4 and you are given that B sits to the left of A, right? So in linear arrangement, last class में मैंने आपको बताया था B sits to the left of A या फिर B sits to the immediate left of A. ये दोनों statements different होती हैं, right? तो linear arrangement में अगर आपको बोला हुआ है B sits to the left of A, इसका मतलब क्या है? B A के left में कहीं पे भी बैठ सकता है, right? So Ruchi has mentioned correctly, Prahlad has mentioned correctly, very good. So अगर A यहाँ पे बैठा हुआ है और ये बोला हुआ है that B sits to the left of A, तो B इन तीनों chairs में से कहीं पे भी बैठ सकता है. So B can be sitting at either chair number 1 or chair number 2 or chair number 3 because B sits to the left of A का मतलब क्या है? B sits anywhere to the left of A. हम immediate left assume नहीं करेंगे, left में कहीं पे भी हो सकता है. But this changes in circular arrangement. Circular arrangement में ये थोड़ा सा change हो जाता है. Circular arrangement में अगर आपको बोला हुआ है B sits to the left of A, तो इसका मतलब क्या है? B sits to the immediate left of A. So circular arrangements पे left का मतलब immediate left है, ये आपको assume करना होगा. Right? So this is one point of difference between linear arrangements and circular arrangements. मैं दोबारा से repeat कर रहा हूं ये चीज. अगर आपको circular arrangements के क्वेश्चन में बोला हुआ है B sits to the left of A, तो आप यहां पे क्या कंसिडर करोगे? You will consider that B sits to the immediate left of A. All right? So according to this statement, if A is sitting at chair number 2, this is chair number 2. If A is sitting at chair number 2, at which chair B will sit? Come on, tell me. At which chair B will sit if A is sitting at chair number 2? Roblox, be very careful. ठीक है? So B is sitting to the left of A. B sits to the left of A. A का left कहां पे होगा? If A is facing inside, A's left will be this. A का face अंदर की तरफ है. आप ये फिगर बनाओ, आलस मत करो, फिगर बनाओ and rotate the notebook and behave as if you are sitting in place of A. ठीक है? तो इस तरीके से behave करो कि आप A की जगह बैठे हो, तो आपका left will be the left of A. All right, ठीक है. So Prahlad, it will not be 1 or 3, दोनों नहीं होंगे. If B sits to the left of A, A का left A की डायरेक्शन में होगा. A is facing towards the center of the table. आपको बोला हुआ है that A is facing towards the center of the table. तो A का left कहां पे होगा? इधर. So B will be sitting to the left of A. B will be sitting at chair number 3. All right. Am I clear to all of you? Yes or no? Perfect, perfect. So this was one of statements which differs from linear arrangements in circular arrangements. All right. Now the next statement that differs from linear arrangement in circular arrangement is this one. Okay. So linear arrangement में इसका interpretation क्या होता था? C sits between A and B. Okay. तो इसका interpretation होता था C is one of the persons who is sitting between A and B. या फिर A और B के बीच में C बैठा हुआ है and C के अलावा there can be some other people who may be sitting between A and B, right? So basically इस statement का मतलब क्या है? It's not C who is sitting only between A and B. It's not only C who is between A and B. C के अलावा भी और कोई बैठ सकता है, right? ये चीज हमने देखी थी. And
in linear arrangements, this statement is different from only C sits between A and B, right? So in linear arrangements, these two statements are different. So second statement जो मैंने लिखा है यहाँ पे, only C sits between A and B, right? Only C sits between A and B, इसका मतलब क्या है? A, B and C इस तरीके से बैठेंगे at consecutive chairs, such that C will be the only person who sits between A and B. So it can be like this as well, right? ठीक है? फर्स्ट स्टेटमेंट, इसका मतलब क्या है? C के अलावा और कोई भी बैठ सकता है A और B के बीच में. C is not the only person who is sitting between A and B. ठीक है, right? But circular arrangements में ये दोनों statements का meaning same है. तो अगर आपको बोला हुआ है that C sits between A and B, so you can consider that only C sits between A and B. C अकेला है जो A और B के बीच में बैठेगा, right? ठीक है. All right, ठीक है. So this is the second statement which I can say that differs from linear arrangement to circular arrangement. अगर आपको बोला हुआ है C sits between A and B, you can consider that C is the only person who sits between A and B. All right. So these are the 2 point of difference. जिस भी स्टूडेंट ने लीनियर अरेंजमेंट्स की क्लास अटेंड नहीं की है लास्ट वीक की, आज की क्लास खत्म होते ही लीनियर अरेंजमेंट्स की क्लास अटेंड करना. वहां पे हमने बहुत सारी स्टेटमेंट्स कंसिडर की थी, सबका इंटरप्रिटेशन बताया था मैंने क्या होगा, डायग्राम प्रॉपर बना के, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी विद द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी स्टेटमेंट. ओके, राइट? चलिए, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट सम क्वेश्चंस. कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ऑल ऑफ यू. So first of all, the set of directions given on your screen, draw the arrangement using this set of direction. Post done in the chat box अगर आपका arrangement बन जाए, and then I'll display the questions. ठीक है? तो सबसे पहले arrangement draw कर लो, and then I'll take you to the questions. युविका, you are saying class is not going properly in app. Which class you are talking about? अगर अभी करंट ये वाली क्लास की बात कर रहे हो तो टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है. I have no idea. रौनक, you are late. कोई प्रॉब्लम नहीं है. इस क्लास को शुरू से एक बार अटेंड कर लेना. भाई कोई बता दो ये बैच किन के लिए है? मंजीत शॉ, दिस बैच, ये जो बैच है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो आईपी मैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, एंड उनके बेसिक्स थोड़े वीक हैं, राइट? तो दिस इज फाउंडेशन क्लास फॉर आईपी मैट, राइट? तो अगर कोई भी टॉपिक है, लीनियर अरेंजमेंट्स है, सर्कुलर अरेंजमेंट्स है, जो आपने क्लास में अटेंड किया या फिर आप खुद से पढ़ाई कर रहे हो और आपको क्लियर नहीं हो रहा है, तो मैं इस बैच में, ये जो यूट्यूब पे जो बैच चल रहा है, इस पे मैं बहुत ही बेसिक चीजें करवाने वाला हूं फॉर सम ऑफ दीज टॉपिक्स. ओके, काव्या, आई एम सॉरी, मेरे को इसका कुछ आइडिया नहीं था, बट यू विल डेफिनेटली गेट द बुक्स. Ronak, IPMAT and JIPMAT both examinations, right? IPMAT, JIPMAT both the examination. IPMAT Indore, IPMAT Rohtak and JIPMAT, right? Yes, Roblox. अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग है, देखो ये फाउंडेशन की क्लास है दोस्त, फाउंडेशन की क्लास है, तो फाउंडेशन में क्या होगा, बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट होगा. तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं आपको बहुत डिफिकल्ट चीजें कराऊंगा, तो नहीं, राइट? ऑल्सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराऊंगा, तो आप ये क्लास अटेंड कर सकते हो जस्ट फॉर द सेक ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस. तो जैसे अभी ये क्वेश्चन है, तो अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, आपको प्रैक्टिस होगी, थोड़ा सा और आपका लेवल इंप्रूव हो जाएगा. ऑलराइट काव्या. रौनक, यू कैन विजिट द ऐप यार, वहां पे फीस पता लग जाएगी. All right, people, now you all focus towards this set. Draw the arrangement and post done in the chat box once you are done with this.
रिया वीआरसी एंड क्वांट की क्लास भी होगी इसके पैरेलल, डू नॉट वरी एट ऑल. Anyone who is done drawing the arrangement, only Ruchi has posted done in the chat box. Other students जो इधर उधर की बातें कर रहे हैं दोस्त, ये क्वेश्चंस ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है. सो अभी क्लास में, क्लास किस चीज के लिए है? सर्कुलर अरेंजमेंट्स. तो प्लीज फोकस ऑन द एजेंडा ऑफ टुडेज क्लास. काव्या एंड प्रहलाद, बोथ ऑफ यू आर डन. युविका इज डन. ऑल राइट, ठीक है. So now I am going to display the questions. There are two questions based on this. So as you can see at the bottom. So question number 1. So अपना जो आंसर चैट बॉक्स में लिखोगे इस तरीके से लिखो, क्वेश्चन नंबर 1 फॉलोड बाय उसका आंसर, देन स्पेस क्वेश्चन नंबर 2 उसका आंसर. राइट बोथ द आंसर्स इन अ सिंगल मैसेज. दोनों आंसर एक सेम मैसेज में लिख दो, ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर फॉलोड बाय क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर. Yes, people, quickly write both the answers. All right, great, good. चलें देखें, हाँ, what will be the arrangement for this? So there are 8 friends who are sitting in a circle facing the center of the table. ठीक है, so 8 friends facing the center. So I'll draw a circle 1 और थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं. So 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Now सर्कुलर अरेंजमेंट्स में एक और बहुत सही चीज है दैट आप सर्कुलर अरेंजमेंट्स में किसी भी एक पर्सन को कहीं पे भी बिठा के अरेंजमेंट स्टार्ट कर सकते हो. ओके, सो आई डू द सेम थिंग. पहले मैं चेयर नंबर्स लिख देता हूं जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस. 5 6 7 and 8. Okay, now 8 friends P Q R S T U V and W are sitting around a circular table facing the center of the table. T sits opposite to P. तो मैं यहां से स्टार्ट कर लेता हूं. T और P ऑपोजिट बैठे हैं, तो किन्हीं भी दो ऑपोजिट चेयर्स पे T और P को बिठा देते हैं. सो आई विल मेक P सिट हियर एंड T एट चेयर नंबर 1. सो T को चेयर नंबर 1 पे बिठा दिया, उसके ऑपोजिट P को बिठा दिया चेयर नंबर 5 पे. डन. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज डन. सेकेंड स्टेटमेंट, Q sits to the immediate left of T. Now T का immediate left कौन सा होगा? Immediate left of T will be chair number 2. So T का लेफ्ट क्या होगा? चेयर नंबर 2. एंड कौन बैठा है यहाँ पे? Q. So Q sits to the immediate left of T. So Q will sit here. T, who sits to the immediate left of W? T sits to the immediate left of W. So W will be at chair number 8. Done? Perfect. So second statement is also used. Third statement, S sits to the immediate right of P. Now S sits to the immediate right of P. P का right क्या है? Chair number 4. Who is sitting here? S is sitting here. And to the immediate left of V. So S is sitting to the immediate right of P and to the immediate left of V. So immediate left of V is S. तो V यहाँ पे आ जाएगा, S इधर आ जाएगा. Statement number 3 is also done. Next, last statement,
R never sits opposite to Q. Q के opposite नहीं बैठेगा R. Now Q के opposite chair number 6 है, R यहाँ पे नहीं बैठेगा, तो R के लिए कौन सी place होगी? It will be only chair number 7. R will sit here, and out of 8, the only remaining person कौन बचा है? So P, Q, R, S, T, U. U is left. U will be sitting at this place. अब आप लोगों का अरेंजमेंट साइक्लिक ऑर्डर देख लो, आप लोगों का अरेंजमेंट साइक्लिक ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है? कहीं से भी स्टार्ट करो, कहीं से भी एंड करो, साइक्लिक ऑर्डर सेम होना चाहिए. सो हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट द सेम अरेंजमेंट? क्विकली राइट यस इन द चैट बॉक्स. जल्दी से यस लिख दो चैट बॉक्स में अगर आपका सेम अरेंजमेंट आया है. सो लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस. तो एक एक करके क्वेश्चंस देखते हैं अब. I got them right. Yes, mine. Yes, yes, yes. Lovely. काफी सारे स्टूडेंट्स का सेम आंसर आया है. So आंसर्स देखते हैं. So question number 1 says who sits between S and Q? S और Q के बीच में कौन बैठा है? Q is here, S is here. इनके बीच में कौन है? V. So option 2 is correct answer. Question number 2, who sits opposite to Q? Q के opposite कौन है? Q के opposite है U. So U is the correct answer. So question number 1, option 2, and question number 2, option 1 are the correct answers. ठीक है? Done. Simple question था, बहुत basic question था. This class is for basics only. ठीक है? तो जिनको प्रॉब्लम होती है ना एक स्टार्ट करने में, ये लेक्चर उन स्टूडेंट्स के लिए डिफाइंड है. बहुत बेसिक क्वेश्चन था ये, राइट? एक और सेट सॉल्व करते हैं. बेसिक सेट होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है इस वाले सेट से, right? So shall we move on to the second set? Yes or no? All right, great, perfect. चलते हैं. So second set पे चलते हैं. So all of you focus here. This is the set of directions, the complete set of directions. Draw the arrangement using this, and then I'll take you to the questions. Okay, Ronak, you are asking इसके बाद इसकी प्रैक्टिस किस बुक से करें? So Ronak, if you are already a student of IPMAT वाला, ठीक है, तो आपको हर लेक्चर के एंड में DPPs मिलती हैं, राइट? तो अब जब भी आपकी क्लास में रेगुलर बैच में सर्कुलर अरेंजमेंट्स की क्लास हो जाएगी, लीनियर अरेंजमेंट्स की क्लास होगी, तो आप क्लास में जो क्वेश्चंस होते हैं वहां से प्रैक्टिस करो, DPP में से प्रैक्टिस करो. एंड बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ IPMAT वाला, soon you will be receiving the books from us as well. तो आप बुक में से भी प्रैक्टिस कर सकते हो. उसके बाद ऑनलाइन आपके पास प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, टेस्ट पेपर्स होते हैं, आप वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हो. Now draw the arrangement and post done in the chat box once you are done with this. जल्दी. Thank you, Roblox. And those who are done with the arrangements, please post done in the chat box. जिसका अरेंजमेंट बन चुका है, सर्कुलर अरेंजमेंट ड्रॉ हो चुका है,
please post done in the chat box. All right, nice. So 5 students are done. Good. Okay. So there will be 3 questions related to this. Once again, you'll have to find out the answers of all 3 questions, and then question number 1 followed by the answer, question number 2 followed by the answer. This time just write the option number. So question number 1, let's say option A is correct. So do not write the name of the person, write the option number, option A, B, C or D as your answer. Okay. So now once you have the arrangement, एक बार arrangement बन जाता है ना, तो questions के जो answers हैं 10 seconds में आ जाते हैं, even less than that. Come on, post your answers. All right, so Ruchi is the first one to do this. Very good, Ruchi. Anyone else? रुचि, I could understand. ठीक है, आपने वो 1 की जगह A कर दिया, but I could understand that. And Nandu Cuckoo Comedy Crew. Okay, so you have also given the answer. Very good. Prahlad. Come on people, do it quickly. जल्दी से answers लिखो, खत्म करो इसे. Okay, चलिए start करते हैं, arrangement draw करते हैं. So once again we have 8 people sitting around a circular table and all of them are facing towards the center of the table. Okay, so I'll draw these 8 chairs. Okay, and मैं number लिख देता हूँ again for your convenience, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. ठीक है. Now where is the first condition? First condition is D is to the immediate right of P. D is to the immediate right of P. P को बिठा दो कहीं पे भी. So I'll make P sit at chair number 5. D is to the immediate right of P. So P के immediate right में D है. All right? ठीक है. So मैंने P को किसी भी एक chair पे बिठा के assumption start किया. So P अगर chair number 5 पे बैठेगा तो D who is to the immediate right of P. So immediate right of P is chair number 4. Done? तो यहां तक complete हो गया. अब N is between H and M. अब N भी नहीं पता कहां बैठा है, H भी नहीं पता, M भी नहीं पता, right? तो N का पता नहीं है, H का पता नहीं है, M का पता नहीं है, तो इस स्टेटमेंट को छोड़ देते हैं. ठीक है. नेक्स्ट स्टेटमेंट, A is to the immediate left of M. अब M नहीं पता, A नहीं पता, इस स्टेटमेंट को भी छोड़ देता हूं. लास्ट स्टेटमेंट, ओनली L is between K and D. K और D के बीच में एक पर्सन है L, राइट? सो D यहां पे है तो K इधर हो जाएगा एंड L इधर आ जाएगा, राइट? सो D is to the immediate right of P and D and K के बीच में यहां पे कौन है? L, राइट? ठीक है. सो ये वाली लास्ट स्टेटमेंट को यूज करके मैंने L, K एंड D इन तीनों को बिठा दिया. D तो पहले ही था यहां पे. डन, फाइन. अब ये स्टेटमेंट आती है N is between H and M. N is between H and M.
तो एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, और M N एंड देन H ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, राइट। बट A इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M, M के इमीडिएट लेफ्ट में A के लिए जगह होनी चाहिए। तो ये H N M ये इन चार में से 3 कंसेक्यूटिव चेयर्स पे आएंगे, राइट, सच दैट M के इमीडिएट लेफ्ट में A होना चाहिए, A इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M। तो अगर मैं यहां पे M को बिठाता हूं, M, रुको मैं दूसरे कलर से मेंशन कर देता हूं बहुत आराम से। सो M को अगर मैं यहां पे बिठाता हूं, M देन N एंड देन H, तो A जो इमीडिएट लेफ्ट होना चाहिए M के, उसके लिए तो यार कोई जगह ही नहीं बची, राइट। तो अब यहां पे क्या करना चाहिए, मुझे M को इस तरीके से बिठाना चाहिए सच दैट M के इमीडिएट लेफ्ट में कोई ना कोई जगह बची हो। सो आई विल बी प्लेसिंग M एट चेयर नंबर 8, N को यहां पे बिठाएंगे, H को यहां पे बिठाएंगे सच दैट A विल बी सिटिंग हियर। A इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M, A इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M, ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी है, ठीक है, राइट। सो दिस इज द फाइनल अरेंजमेंट एंड जल्दी से कंफर्म कर दो किस किस का सेम अरेंजमेंट आया है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट द सेम अरेंजमेंट? यस लिख दो। प्रियराज, यू आर फ्रॉम प्रो बैच, यू विल सून रिसीव द बुक्स। देख मेरे को करेक्ट एग्जैक्ट डेट तो पता नहीं है, बट इन अ फ्यू डेज यू विल डेफिनेटली रिसीव द बुक्स, ओके। So but it is not written that। युविका, अगर आप आज जो मैंने बेसिक्स पढ़ाए आपको, अगर आप वहां पे जाओगे थोड़ा सा आज की क्लास में जो मैंने आपको बेसिक्स बताए, ठीक है, तो वहां पे आपको पता लग जाएगा N इज बिटवीन H and M, ओनली N इज बिटवीन H and M, इन दोनों का मतलब सेम होता है व्हेन इट कम्स टू सर्कुलर अरेंजमेंट्स, ठीक है। तो आज की क्लास बिगनिंग से देखो, आपको समझ में आ जाएगा, ऑलराइट, ठीक है। चलिए, नाउ अरेंजमेंट सेम है, साइक्लिक ऑर्डर सेम होना चाहिए। सर्कुलर अरेंजमेंट्स में आप किसी भी एक पर्सन से स्टार्ट करो, साइक्लिक ऑर्डर सेम होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चंस के आंसर्स देखते हैं। H is to the immediate left of, H is to the immediate left of P, I can say answer will be P, that is option D. So option D is the correct answer of this question, right? Option D. Done? ग्रेट। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, प्लीज राइट इट। हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए? इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, ए का लेफ्ट कौन है? के, सो के इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, ऑलराइट, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। डन। Last question, which of the following represents a correct order in which 3 people sit? So M-A-K, M-A-K, I can say that this is the correct order. P-D-H, P-D, no, H तो यहाँ पे है. So second option is definitely wrong. A-L-K, A-L-K, no, they are also not in the order. M-P-D, M, P तो बहुत दूर है उससे, और D, so M-P-D again is not the correct order. Right? So option A is the most suitable option to mark as the answer. Right? So option A is correct for question number 3. All right? So friends, these are all the basics of circular arrangements. So what we have done today is we have, based on the previous lecture, linear arrangements, have tried to understand कि linear arrangement में जो कुछ statements हमने last time की थी, वहां से सर्कुलर अरेंजमेंट्स पे कौन कौन सी स्टेटमेंट्स डिफर करेंगी. सो देयर वर 2 स्टेटमेंट्स व्हिच विल डिफर, हमने उनका इंटरप्रिटेशन देखा, एंड देन आफ्टर दैट वी हैव सॉल्व्ड 2 एग्जांपल्स, 2 सेट्स. फर्स्ट सेट हैड 2 क्वेश्चंस, सेकंड हैड 3 क्वेश्चंस, राइट. सो दिस इज ऑल. सर क्लॉक्स हार्ड लग रहा है, रूब्लॉक्स. आई विल कीप 1 लेक्चर फॉर क्लॉक्स एज वेल in the basic foundation classes. ठीक है? So friends, for today that's all from my side. I'll see you in the next week. Have a nice time. Bye bye.